फॉर इसको ओपन करने के लिए इधर स्क्रू ड्राइवर डालना है और इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। इसमें लॉक्स हैं जो फंसे हुए होते हैं इस बॉडी के अंदर, ये पार्ट बाहर आ जाएगा। फिर येलो बॉडी को ओपन करना है। येलो बॉडी को ओपन करने के लिए वही 9 नंबर का टॉक्स आपको यूज़ करना है इधर। 10 नंबर का टॉक्स हमें लेना है। सभी के सभी नट ओपन कर लेने हैं। इसके बाद इसका स्विच ख़राब है, स्विच डैमेज है इसका, इसलिए वर्क नहीं कर रही है। अभी अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ या इट्स वर्किंग परफेक्टली। इसके स्विच में इसकी जो नॉब है वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। आई ट्राई टू रिपेयर इट बट नो इट्स नॉट वर्किंग, अदरवाइज मशीन इज़ ओके। सो ये मोटर है, ये इसकी बेल्ट जो कि ब्रश को घुमाती है विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। ये इसकी पीसीबी है इधर। पीसीबी के अंदर 2 लिथियम आयन सेल्स, सॉरी 1 लिथियम आयन सेल जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। ये चार्जिंग पॉइंट हो गया है। ये कनेक्शन मोटर्स के हैं। सो इतना कुछ ही है, इतना सब कुछ है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू रिपेयर। क्लोज करने के लिए सेम प्रोसीजर, जस्ट लेट्स क्लोज इट।
मेक श्योर कि आपकी वायरें प्रॉपर रूटेड होनी चाहिए ताकि बॉडी के फिट में, बॉडी के कांटेक्ट में आके डैमेज ना हो। तो हमें सलीके से भी नट को क्लोज करना है। जय श्री राधे की हाल चाल हो उनके रहो नहीं पे करो लाठी वाला हम कह जाते लाठी वाला हम कह जाते यार लो ये कौन जाते ना सब हम लोग ये लाड़ी महाकाल के कपड़ पहने वाले सब लाद दिया सब लाद कर ये रखा हुआ बहुत सुंदर